So I think we have a consensus between the opposition and the. Yeah, I was trying. First agenda, we have a consensus. However, we How need to about decide we the first second agenda. Priya Sadam Excuse me. like elaborate what she's talking about, because I really have no clue what she told me. Rahul Gandhi ma'am. Let's just wait How for much her. time you So are Priya giving Sole, for please the go ahead. first motion? 90 seconds per speaker, 30 Can we minutes for the entire discussion. 20 seconds? Sorry? Because Guys, please don't so एक साथ मत बोलो, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल. Please don't say together. As Farm Bill 2020 is a broad topic, can we extend the per speaker time to 90 seconds to 120 seconds? That will be okay. Then we have left for the question. बहुत ज़्यादा होगा. Man, there are three exactly. major points in Farm Bill 2020. I'm not saying I don't. However, agree. most people are going to bring up the There same should be thing, number right? of speakers to speak, right? We cannot have 2 or 4 number of speakers भी और साथ साथ क्वेश्चन आवर भी होने वाला है 4 से 5 बजे. जितना जल्दी हो सके उतना करना पड़ेगा. सर तो हम लोग एक ही टॉपिक कर लेते हैं आज. दूसरा एजेंडा जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं तो कल ले लेंगे. Perhaps we Can I speak? I had a point. Yes, please. Yes, go ahead. Yeah, so I was telling that farm laws भी अच्छे हैं, but we can speak on irrigation also, because I was Nirmala, We had this discussion earlier as well. मतलब We've come to a consensus on the farm laws. Let's stick Can to I say that. something? Yeah, Please go go ahead. ahead. जैसे कि आज सुबह जो एजेंडा पास नहीं हो पाए ना, जैसे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, इरिगेशन हो गया, उनको कल के लिए रख देते, फिर कल उनको पास करके उनके ऊपर डिस्कशन कर देंगे. लेकिन आज फार्म लॉज और Exactly. कल का अभी फार्म बिल डिस्कस करना है हमें, ये श्योर है हो चुके हैं हम लोग. बस टाइम का फार्म बिल I डिस्कस think करना है. 90 एक seconds टॉपिक उठाते हैं हम लोग, suffice, एक टॉपिक given पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग Right. क्वेश्चन So let's do that. Let's give 90 seconds. The question is from 4. नहीं, question Right. I I guess बोल रहा हूँ ना कि 7 से 8 मिनिस्टर्स हैं यहाँ पे, मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन पर है. ज्यादा कितने बोलोगे? 60 सेकंड, 120 But उसमें follow-up questions भी होंगे ना. एंड फॉलो अप क्वेश्चंस अगर रखेंगे फिर तो कंटीन्यूअस कमिट बहुत देर तक चल जाएगा. अभी 2:15 हो रहा है, हमारे पास 4 बजे तक का टाइम है. वी कैन इजीली डिस्कस 2 टॉपिक्स. यस, वो आराम से. अभी अगर कोई हंगामा ऐसा हो गया तो सब एजेंडा में एक्चुअली वेट इस सब एजेंडा में हम लोगों को पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी तो रखना है, उसके लिए भी टाइम लगेगा. पर स्पीकर टाइम 2 मिनट्स रख लीजिए और 20 स्पीकर्स फिर रख लीजिए, discussion- 40 मिनट. सर तो अगर पर स्पीकर डिस्कशन ही 1 घंटे का रख ले, 1 तो घंटे फिर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा. 4 ऐसे ही बच जाएंगे. आप दो मोशन नहीं दे पाएंगे फिर उसमें. ठीक है, तो let's keep one motion, 90 seconds speaker time with point of information or follow questions or something. Can I say something? That'll give us time. 1 second. That'll give us time I think to we should ask go ahead questions with that the we did idea. not cover in our speech. हरदीप साहब. जी बोलिए सर. सर मैं क्या बोलता हूँ, आप ही मोशन रखिए गवर्नमेंट की तरफ से, और एक ही मोशन रखिए. अभी एमएसपी का रखिए तो फार्म बिल का, फिर उसके ऊपर एक मोशन डिसाइड हो गया. एक मोशन तो डिसाइड हो गया ना कि फार्म बिल डिस्कस करेंगे. वो मोशन पे वोटिंग कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, बाद में का आगे डिस्कस कर लेंगे. But today's meeting we need to decide speaker time, right? फिर हम लोग क्वेश्चन. Yeah, so 90 seconds will do then, right? The motion is decided. repeat 2 The minutes. voting is एक करके बोलो. Please, we cannot understand everyone. Yes. Over. May I go ahead? या हरदीप सिंह आप जाइए पहले. Yes. I think 2 minutes is fine. It is neither too less nor too much, so I think we should go with 2 minutes. Yeah, I agree. 2 minutes should be ideal for this broader topic. Yes, exactly. We talk Later on we can farm laws, discuss about it. Yeah. However, can we have follow-up questions or Yeah, points of sure. information Points of order. fine. on Point of order, ma'am. वो तो देखा जाएगा, वो फॉलो अप या पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन आएगा, बिकॉज़ ऑपोजिशन वैसे भी उनका स्पीच भी फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस होने वाला है, एंड देन क्वेश्चंस का रिप्लाई इधर से आएगा. लाइक लेट्स बी प्रैक्टिकल, गवर्नमेंट विल बी आंसरिंग दोस क्वेश्चंस काइंड ऑफ, एंड अगेन क्वेश्चन का स्पीच, देन आंसर स्पीच एंड देन क्वेश्चंस. सो उतने क्वेश्चंस नहीं आ पाएंगे, ले दे करके 5 क्वेश्चन होंगे जो वर्ड्स चेंज करके रिपीट होने वाला है.
agree to Giriraj Singh. Plus, we'll have point of information and point of order as well. Yes. Point of order में उठाइए जो उठाना है. Yes. तो वो मैनेज हो जाएगा. That won't be ज़्यादा problem. तो 2 मिनट काफी है farms law के लिए, I guess. That will do. एंड वोटिंग जो होगा अभी मोशन एजेंडा के लिए उसमें सब वोट करिए, ये नहीं कि कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है. एजेंडा के ऊपर वोटिंग करना बहुत जरूरी है अभी. ठीक है सर, did you say something? Couldn't hear you. Yeah, welcome back everyone. So the House is in formal session now, seeking any motions of the floor. Farooq Abdullah, followed by Rahul Gandhi, followed by Narendra Modi. That's it. Yeah, Farooq Abdullah Sabune. Yes, sir. Thank you. I, Farooq Abdullah, would like to raise a motion of Farm Bill 2020 for per speaker time 120 seconds for 1 hour. Per speaker's time 120 seconds for 1 hour. Okay. Yes, sir. Rahul Gandhi. To raise the same agenda, sir. Came to a consensus unanimously. So. Perfect. So everyone else is raising the same agenda? Yes, sir. No, sir. I have some different agenda. All right, Dr. Yes. Shrikant Eknath Shinde. So I, Dr. Shrikant Eknath Shinde, would like to raise the short period discussion on the topic of crop insurance reforms for a total time period of 20 minutes and per speaker time 1 minute. Okay, sir. But all right. Hardeep Singh Puri Saab, do you have something else? We'll be taking 3, so yeah. Yes, sir. So I'd like to move a motion for a short period discussion on the topic MSP with including the farm laws or the farm laws including the MSP. Per speaker time 20 minutes and we shall have 15 speakers. Sorry, per speaker time 2 minutes and we shall have 15 speakers. Okay. So first we vote upon the motion proposed by Farooq Abdullah Sahab for a discussion on farm laws. Your voice is breaking. Sir, your voice is not coming. All right, am I audible now? Those in favor of this particular motion may raise their hands now. 12 people are voting for it, 15, 17, all right, 18. Thank you. Thank you so much, everyone. This motion passes. Dr. Farooq Abdullah, will you be the first speaker, sir? Yes, sir. Perfect. All right, sir. Just give me a minute. Members who are wishing to make, who all wish to make statement in this particular session, may raise their hands now. All right. So Farooq Abdullah, followed by Bhupendra Yadav, followed by C. Lal Rusanga, followed by B.C. Goswami, followed by Kanimoji, followed by Piyush Goyal, followed by Rahul Gandhi. जिन का नाम नहीं लिया, kindly lower down your hands, please. सर मैंने भी
हाथ ऊपर किया था पहले से. Sir, I have also raised my Which hand, but I have not sir, received. which part of the statement जिनका नाम ले लिया kindly lower down your hands please में ये कहाँ बोला गया आपको कि आप हाथ हटा लो? ओके सॉरी सर बोलने के लिए थोड़ी बोलना है कि कुछ भी बोलना है? So at least pay attention to what I'm saying, right? यस सर. Followed by Rajnath Singh, followed by Shrikant Shinde, followed by Giraj Singh, followed by Manish Srinivas Reddy, followed by Hardeep Puri, followed by Supriya Sule, followed by Nirmala Sitaraman, followed by A. Raja, followed by Harsimrat Kaur Badal, followed by A. Raja, Arjun Munda, Narendra Modi, नहीं, Mahua Moitra, and last one is Narendra Modi. All right. हो गया कोई बचा? नहीं सर. सर और एक चीज था वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का क्या हो जो हमने उठाया था? सर वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक फिगर ऑफ स्पीच है क्योंकि कुछ ये क्लेम करते हैं कि 700 डेथ्स हुई है, कुछ ये क्लेम करते हैं कि 200 डेथ्स हुई है, कुछ ये क्लेम कर रहे हैं कि 500 डेथ ऑन द स्पॉट हुई है फार्मर प्रोटेस्ट में. सो देयर आर डिफरेंट स्पीचेस बट एज फार एज जो किसान संयुक्त किसान एकता मंच है वो 700 डेथ्स ही क्लेम कर रहा है. यस सर. ओके. बोलेंगे आगे? हाँ सर कुछ बोलना चाहूंगा. बोलो बोलो. वो 700 डेथ तो क्लेम कर रहा है लेकिन सर वो ऐसा तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट ने उनको मारा. अब हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि उनके क्लेम में गवर्नमेंट एक फिगर ऑफ स्पीच होती है. मतलब उन्होंने ये नहीं कहा ना कि अगर कल को वो एक कहती है दैट द ब्लेम ऑफ दीज डेथ्स इज ऑन द गवर्नमेंट, तो इसका मतलब ये थोड़ी भारत सरकार को आप ले जाके खड़ा कर दो कटघरे में और फांसी पे चढ़ा दो. पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज यूज्ड ऑन फैक्ट्स, not on your beliefs. Point of order होगा if I say that Mumbai is the capital of India, which is factually inaccurate. So there you have all the rights to raise a point of order, but not on a figure of speech. Okay sir. Thanks sir for the clarification. ठीक है कि अगर जैसे किसी को कहता है अगर किसी को बहुत पसीना आ रहा होता है तो you are a pig. So it is a figure of speech. You are a pig का मतलब you are sweating like a pig. उसका मतलब ये नहीं होता ना कि तुम legit सुअर हो. Okay sir. So figure of speech is altogether different thing. Fact is an altogether different thing. Mahua Moitra कुछ कह रही हैं आप? नहीं sir. Sorry, program बना You still have your hand raised. Yeah, sorry sir. I didn't.
Sorry, all right, okay, perfect. Farooq Abdullah Sahab, you have the floor for next 2 minutes. सर माफी चाहूंगा, नेटवर्क कनेक्शन की वजह से अगर मैं वीडियो ऑन करता हूं अपनी तो फिर ये मतलब वॉइस मेरा ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने चेक किया तो ऑन कर सर लो जैसे आप या फिर कंफर्टेबल है वैसे चलाइए। नहीं सर, जैसे आप बोलेंगे उस तरीके नहीं से नहीं चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके सर, ओके सर। ऑन माय 3 2 1 फार्म बिल 2020, इसमें 3 घटक थे, 3 मेन बिंदु थे। द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 जो पहला था, इसको एक नॉर्मल वे में देखें तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की तरीके से देख सकते हैं, जिसमें सरकार ने ये पीछा छुड़ा लिया कि अब भाई किसान अपने किसी भी बिजनेस ओनर से लीगल एग्रीमेंट तय कर सकता है और बिजनेस ओनर और फार्मर्स के बीच जो भी प्राइस तय होंगी वो आपस में देखेंगे एक लीगल एग्रीमेंट के तौर पे। इससे बड़े बिजनेसमैन को मौका मिल किसानों की उत्पीड़न करने के लिए, उनका एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए। कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स लगा देंगे वो, अब भाई ऐसा करो, डिलीवरी रिक्वायरमेंट चाहिए फिर उनको। फिर ये किसान, छोटे किसान तो करे कैसे। और बहुत सारे अभी भी हमारे भाई बहन पढ़े लिखे नहीं है, जिनको लीगल एग्रीमेंट ढंग से बनाना या पढ़ना नहीं आता, तो उनका एक्सप्लॉइटेशन देखने के लिए कौन वहां जिम्मेदार होगा अगर आप ये पहला लाते हैं तो। जैसे ये रूल लाते हैं। दूसरा, द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 APMC यार्ड को आप खत्म कर रहे हैं, मंडी के सिस्टम गवर्नमेंट की लिस्ट में आता है एग्रीकल्चर जनाब, स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में। सेकेंड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की जगह की व्यवस्था कौन करेगा? अगर मंडी में ही सब कुछ जाएगा तो फिर वो जो MSP था उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बड़े फार्मर्स तो बड़े अच्छे से आमदनी कमाएंगे, छोटे फार्मर्स का क्या होगा? तीसरा, द एसेंशियल्स कमोडिटी अमेंडमेंट बिल, इसमें तो आपने एसेंशियल्स चीज ही हटा दी है। सेरेल पल्सेस रोजमर्रा की जिंदगी में चलता है, रोज लोग खाते हैं, अगर आप इनको एसेंशियल चीज में से हटा देंगे तो फिर क्या उन लोगों का? Hello. Am I audible? Yes, sir. You are now audible. So, question irrespective of the ruling being limited to the ruling party itself? Madam, I am not responding to this question. पर अभी ये सवाल आए so I have put people in the list there in the chat box. The next स्पेसिफिकली उसके ऊपर क्वेश्चन आर लिखा होना चाहिए। आपने क्वेश्चन आर तो वो परफेक्ट। हाँ जी, भूपेंद्र सिंह साहब चालू हो जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, और धन्यवाद आपका कि आपने मुझे समय। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किसान कानून हमने लाए थे पिछले में, वो ऐसे कानून थे कि
किसानों के पक्ष इतना गलत मैसेज से उनको देश में अराजकता की सर आज भी हम आपको बता देना चाहते कि पंजाब एपीएमसी को खत्म हटा दिया गया है। तो उसी को देखा देखी में कई राज्यों में बनाए गए थे, उनको की, लेकिन दलों ने खास करके कम्युनिस्ट पार्टियों ने मिलके इसका सार्थक असर दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी रही है, किसी सरकार ने काम नहीं किया। जो कई लोग तो अपने सीट बदल के दक्षिण भारत के राज्यों में भी गए सर, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं और देश को भी बताना चाहते हैं कि जो किसान कानून अब देश में आने वाले हैं वो एक बहुत ही सकारात्मक रूप से किसानों के पक्ष में होंगे और उन्हीं का ख्याल रखेंगे, ना ही किसी और का, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हमारी नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा किसानों और चाहे उसे जान भी देना पड़े। धन्यवाद महोदय। Hello. Hello. Yes, speaker, sir. Sir, you are audible. Yeah. Oh, sorry. We move on to the next speaker, Shri. Anji. I have a point of order. Yes, sir, please. Rahul Gandhi here. I had a point. Rahul Gandhi is to be addressed as sir, right? Yes, yes, sir. I thought you would identify. I was not sure if you would Yeah, recognize me. go or ahead. Farooq Abdullah. Go ahead. So the point of order was Shri Bhupendra Yadav sir mentioned APMCs came up. However, Punjab still has a very strong APMC structure, and the state that actually removed APMC was in fact an example of how APMCs, well, not perfect, actually help. Fact. He misspoke when he said that Actual mistake are two different things, right? He made a factual error then when he said that Punjab removed APMCs, which is not in fact. All right, agreed point. Very well. Sir, yes, sir. Thank Point. you. Sir, quote
श्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि एपीएमसी और मंडी बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म है और किसानों को बहुत फायदा होगा, अनकोट मंडी हिसाब से। हमारे हिसाब में तो आपने मंडी को एबॉलिश नहीं किया है। All right, sir. Thank you so much. But it is a sort of figure of speech. Cannot quote it. It's Piyush Goyal sir. It is a figure of speech or factual mistake, sir. It is a figure of speech. कर दिया सर। ऐसा कुछ सरकार है। You realize that? सर वो खुद ही सरकार में और खुद ही कह रहे हैं कि मंडी और एपीएमसी सिस्टम ही आज की डेट पे सरकार का ये स्टैंड है। What can you do? नहीं सर, ये लागू करने के बाद की बात कर रहे हैं। लागू भाई साहब मेरी एक चीज सुनो, whatever ठीक है, इनका अगर सरकार का स्टैंड ये है तो इन्होंने रख, सर एक सरकार का स्टैंड है ना वो, तो अब ये चाहे सरकार का स्टैंड सही हो तो गलत हो तो वो पता नहीं। अब आगे मोदी साहब या नरेंद्र सिंह तोमर साहब जाने, भूपेंद्र यादव पॉइंट। ओके सर, ओके है ना। हाँ जी, एनी अदर पॉइंट ऑन द फ्लोर? भूपेंद्र यादव साहब क्या चाहते हैं? कि जो अरे सुनो सुनो, चालू करेंगे और बोले इनको चुप करा दो। हाँ राहुल गांधी जी जल्दी। Point of parliament inquiry. Yes sir. Send a Word document as a question. Madam, can you what you wanna send a Word document? Yes, this for is. what? I wanted to include a particular set of figures, and there's a small table for it. So can I attach that? You just quote the source. I'll look for it myself. I have that amount of research capabilities. C. Lalro Sanga, next speaker, please. So let me begin by straight away coming to the point that Mr. Modi regularly by saying that BJP is trying to help the farmers with pure intentions, but the results matter, not the intentions of the ruling party. The Essential Commodities Act of Amendment Act of 2020 will essentially hand the power of deciding prices of products like oils, pulses, oil seeds, onion, potato, that will be able to hold those commodities. Modi ji claims that APMC markets or mandis do not have ample storage for surplus crop, which is completely true. But that shows the ineffective nature of BJP's rule. They are more willing to sell rights to hold important cash crops, corporations, instead of increasing the. On one hand, refineries are overflowing. Hand, edible oil worth 90,000 crore was being imported in 2021 because NDA. So farmers weren't incentivized to grow those extremely important crops. That is why we had to import it from other countries. NDA also doesn't also just fix the MSP of wheat and sugarcane, but these MSP, so the farmers are more incentivized to grow these products, which is why we have a supply problem. Moreover, the government had to give a subsidy of around 6,000 crores in 2021 to export sugar so that pending dues of sugarcane farmers could be cleared. So all of these
fiscal deficits need to be met by the taxpayers. So instead of that, we should aim to increase the capacity of storage capacity. Thank you. That is all from my side. Thank you so much, sir. Any points on the floor? Seeing none, DC Goswami sahab. Just give me a second. Point of query. Yes, I sir. am the last speaker, and there are a lot of things that are being said against my name, which I cannot necessarily put into a point of order. At the end, to cover up all the replies. Unfortunately, sorry, sir, but that can't be done. All right, so thank you. All right, ask your sons to deal. Sure, sir. हाँ जी पीयूष जी बताएं. Sir, can I counter the point that is made by Farooq Abdullah? Madam, that's what you are expected to do, right? Sorry, sir. Sir, you know what? That's precisely what you are expected to do. Oh. Sir, that's precisely expected. If someone has raised any allegations, you are expected to defend it. Simple. Okay, sir. Okay. Yeah, Dulanjan Goswami sahab, go ahead, please. Thank you so much, Mr. Speaker, for providing me time. पहले तो मैं अभी इस सभा में मैं अकेला सांसद हूँ जो और बिहार के बारे में कई बातें की गई हैं, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ clarification. Act was removed from Bihar in 2006, and since then farmers were free to sell their produce to corporations and companies. अब कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है कि बिहार और हमारा पूरा देश एक समान है, पर ये गलत है. बिहार का किसान अलग है, केरल का किसान अलग है. बिहार में छोटी लैंड होल्डिंग्स का आप देख सकते हो कि प्रोड्यूस जो है वो लोकली ही खत्म हो जाता है. एपीएमसी पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉर्पोरेशंस के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती. बिहार का किसान वहां पर वीट की खेती नहीं होती जो. तो आप देख सकते हो कि जैसे ही ये तीन किसान कानून जो 3 फार्म एक्ट्स हैं जो पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है कि बिहार में पहले एपीएमसी हट गया है, तो बिहार से उसे कुछ नुकसान है, क्योंकि बिहार का किसान में जो मिडल मैन जो रिश्वत लेते थे या जो कमीशन लेते थे उस वो हट है और बिहार का किसान अपनी फसल खुद कंपनियों को बेच पा रहा है. दूसरी हम देखें तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और कहा जा रहा है कि किसानों को ऑप्रेस किया जाएगा, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास किसान को रेमेडी दी गई है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट अप करता है तो आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाके अपनी आप कंप्लेंट दर्ज करें. तो इसलिए हमें लगता है कि जो फार्म एक्ट थे लोग हैं काफी प्रोग्रेस और एक फ्री मार्केट की तरफ हमें ले जा रहे थे, जो बहुत ही जरूरी है जैसे कि डेवलप्ड देशों में देखा जाता है. Thank you, sir. Any points on the speech by Mr. Goswami? Yes, Rahul Gandhi ji, बताएं. Point of information, sir. I'm not allowed point of information via writing. Point of order. Yes, Sir Goswami, she said that Mandi system was in 2006, if I'm not wrong. It was repealed in 2006 and it is still going on. There's a lot of controversies that are itself regarding these issues. I can go on about that in detail. I would not Perfect, ma'am. Point
very well in order. Yes, Rajnath Speaker Singh sir. ji. We say that he was the only MP of Bihar present in this house today, where in fact we have three currently Yes, madam, it's absolutely fine. Kindly continue without the cameras. Okay, Start, sir. So please. thank you. The guaranteed earlier on our part, we are doing is early for check such need for checked off water by private and corporate house, proper storage facility for onions and tomatoes, and also the elephant menses. So I request on this topic that to implement on this. Thank you. Thank you so much, madam. Any questions to any points on the speech made by Karimoji ji? I'm not sure if this point of order stands because the speech wasn't very clear, but there was an implication that MSP has weakened over the years. I would like this of MSP. No, sir, no, sir, no, sir. Not Alright. in So order, sir. that Not might at be all a in order. issue. Excuse. Okay. So good afternoon. Go in front of you all. I want to contradict my point, contradict Mr. Farooq Abdullah point when he said there is farmer who is going to be exploited. In extraordinary circumstances such as war, famine, and exceptional circumstances. I would like to mention the benefits of the farm bills. And these farm bills, the benefits of these farm bills are, with these laws, the union government has intended to liberalize farming with short term of doubling their current income. And the second benefit is the bills empowers farmers through greater market access and expands opportunities for commercial outcomes. From these bills, the market is liberalized and a and some private in India. A farmer can also sell their products. A farmer can also sell his product and he can also save his money, because in APMC he has to pay 2% tax to the state government, but when he sells his product outside country through not APMC, he can save his money. Thank you so much. Problem. All right, okay. चलिए कोई बात नहीं. Any speech made by Piyush Goyal sir? जी.
मेरे arguments, मेरे statements बोला था जैसा नहीं सर, ये ऑर्डर भी तो ले सकते हैं इसमें, इन्होंने ऐसा बोल सर कमोडिटीज वाली बात पे तो ले ही सकते हैं। स्पीच का कुछ पार्ट कोट कराए जितना मुझे है, अब उनकी समझ पे सवाल नहीं हो सकता। ओके सर, ओके Sir, I would like to raise a point of order on Piyush Goyal's speech. Sir, she said that that the state can regulate the prices of commodities in times of extraordinary circumstances, but fact that private corporations can drive the prices up during day-to-day life. So that doesn't make any sense. Sir, like her statement didn't make any sense. हुआ है, उन्होंने ये कहा कि सरकार कई टाइप से प्राइसेस रेगुलेट कर सकती है, क्या ये बात गलत है? नहीं, ये पॉइंट बोला था, उससे कोई फर्क नहीं सर। उन्होंने जो बात कही है वो सही है, आप जो दे रहे हो वो आर्ग्यूमेंट है, वो उन्हें फैक्चुअली गलत प्रूफ नहीं कर रहे हैं। Getting my point? Yes, sir. All right. Any other points on the speech made by Mr. Piyush Goyal? Rahul Gandhi ji, you are the next speaker. So you have the floor. The three black laws that were shoved of a pandemic without discussion and deliberation in the Lok Sabha and voting in the Rajya Sabha are a great example of who this really friends with, who this government really works for, the corporate of this country, the big corporate, and it only tends to the corporate greed and the friends of the BJP. The three laws, the first one that talks about produce, trade, and commerce is actually basically an APMC bypass bill, wherein APMCs can slowly be eradicated and and corporate monopoly can be created, which will only jeopardize the position of the farmers that are already in a lot of plight and agony. Second, tax assurance and farm sales. This to lawyers the way that corporations do, and so nitty-gritties and small parts of the contracts can be used against the farmer. The third, about the Essential Commodities Act, essentially allows big monopolies to store essential goods and rise prices, causing havoc and inflation across the falsely created inflation even. And all of this has been done as they did not bother whether or not these laws are valid or void itself is a discussion under the doctrine of colorable legislation. We should let the Supreme Court decide. However, this government has not, in good faith for the farmers, while preparing these laws, and has only considered corporate trade. Rahul Gandhi ji, are there any points on the speech made by Rahul Gandhi ji? Sir, I wanted to make a point here, point of order, like, sir, that how you see there that exists no point of order like thing. It is either a point of order, मतलब बहुत sure, बहुत certain होना पड़ता है आपको point of order के. Okay, sir. So I was just person. Point of order. Yeah, so my point of order was in the first, he's saying that in the second bill,
we are trying to eradicate the what we say APMCs, but sir, it was not factually correct, sir. After the bill also, till the Supreme Court did not state it, the APMCs were there. सर आपको ये पता है सेकंड बिल कौन सा है? Yes, sir. उन्होंने स्पेसिफाई करा? नहीं। तो फिर जब वो फैक्ट ही स्टेट नहीं कर रहे तो उसमें फैक्चुअली साथ So हुआ point of पॉइंट। order, Rahul Gandhi sir mentioned that uncontrolled price hikes continue. Yes, please. Yes, sir. So there is a provision in the Essential Commodities Act 2020. There was one that if there is a 100% increase in retail price of agriculture food items, either on the price prevailing immediately in the preceding 12 months or the average of the last 5 years, whichever is low, there can be a limit on the stocks of the item. So there is no uncontrollable wreaking havoc. सर मतलब आज की डेट में do you really believe कि कोई? Sir, I am talking about the provision under the bill. Sir, he never mentioned with respect to the bill. He said in today's scenario, uncontrolled price rise is creating havoc, and it actually is. मतलब मैं केवल ये अब कमिटी तक नहीं रखूंगा. I'll make it rather personal. It is just a statement. आप खुद बताओ यार कि uncontrolled price rise जो हो रही है अभी पेट्रोलियम प्राइसेस जो ऐसे बढ़ती हैं, aren't they creating a havoc? They are. He never mentioned or specified the bill or the provision concerned. So there was a You got my point? Mention of the third bill. Sir, yet again, the third bill, Sir, which the third? Essential Commodities Act. If in respect to farm laws, there has to be some context behind it. Sir, जब मैं कोई फैक्ट स्टेट करूंगा, अगर वो ये बोल देते हैं कि आप let it be any particular APMC Act का section 24 uncontrolled price rise is creating an havoc, I would have factually Yes, sir. Right, clear? The speaker, obviously. I couldn't hear you No, properly. sir, May I beg your pardon, please? I agree with you. All right, perfect, great. Bianca? All right. So I'm writing in the chat box. And all right, in the meanwhile, we can have one more speaker then. Yeah, Rajnath Singh ji. Yes. Greetings to the Honorable Speaker, sir, and the respected members of the House. MSPs are something that the government is constantly working on so as to improve the condition of our Kisans. Our government has provided for a revised MSP for paddy that has increased the prices of the crop. And along with that, we recently revised the fair and remunerative price of sugarcane, owing to which sugarcane farmers now have a return from prices that equal. Now, Speaker, sir, here I would like to point out the fact that a member of the parliament mentioned about crop insurance schemes and how we are doing close to nothing on that. Well, I would like to inform the opposition once again about the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana that provides for insurance of cash as well as food crops in case of calamities such as landslides, pest infestations, and cyclones, among many others.
as well as the restructuring in case of anticipated crop loss resulting from adverse weather conditions result relating to rainfall, temperature, wind, humidity, etc. by using wet as peers in compensating the cultivators for deemed crop losses. In such a situation, we don't go penniless during seasons of crop. Seeing no. Point want to person Shrikant Shinde sir. Am I audible? Yes, sir. You. So, starting in 3-2, and I would like to counter the points put by Farooq Abdullah Saab, where he said that the center is not authorized to make laws on agriculture. It's considered the agriculture being a state subject. According to Article 246 of the Constitution, places entry 14 in markets and how some make a distinction between trade. Agriculture per se would deal with everything that farmer does, right from field preparation and cultivation to also the produce. The act of primary sale at the mandi by the farmer is as much agriculture as production in the field. Trade begins only after the produce has been marketed by the farmer. That promote barrier free trade of farm produce and do not allow stock holding or export restriction. But these can only be done. But these can be only after the farmer has sold. Regulation of the first sale of agriculture produce is a marketing responsibility of the states, not the center. On conclusion, ensure the effective implementation of the same. Thank you. Thank you, sir. Any points on the speech made by Shrikant Shinde Sahib? None. Wonderful. Next, we have Giraj Singh. Giraj Singh, you have the floor for next 2 minutes. Supriya ji. Adhyaksh Mahoday, I have a point of order to raise. Bataya, madam. Stated that in Article 246, the government and the section of that is 33. It is stated that the state has the provision was empowered by Article 369 for a period of 5 years to legislate in respect of certain specified essential. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Sir, hello. Anji. I had a question, sir. Sir, in this questionnaire, we will be focusing questions mainly based on this agriculture topic or any other issue also can be taken. Only sir, कितनी बार बताऊं यार, सुना करो ना ढंग से एक बार में किसी बात को। नहीं वो बाकी मैंने जो अटेंड किया ना उसमें वो कुछ लोकल करंट इश्यूज भी सर वो 0 आवर होता है, ये क्वेश्चन आवर है। Question hour from Manish Srinivas Reddy. Why the central government is in dilemma regarding ban on exports of wheat? में नाम नहीं दे रखा, किससे पूछा गया है तो क्वेश्चन डिस्कार्डेड। Question to the agriculture minister. Sir, your voice is
अरे वो ठीक है, पर सुनो पहले पहले हम मोदी जी। यस सर। भैया नरेंद्र सिंह तोमर कहाँ है? सर मैं पता लगाता हूँ, देखता हूँ। बहुत अच्छे। फार्म लॉस के मुद्दे पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, इकोनॉमी के मुद्दे पे फाइनेंस मिनिस्टर हो रखा है। बहुत अच्छे। We move on to the next question. हाँ रेडी साहब। सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, तो सर ये मेरा ही क्वेश्चन है ना? हाँ वो क्वेश्चन नहीं सर, आप वाला क्वेश्चन डिस्कार्ड कर दिया सर मैंने उसके जस्ट नीचे ही लिख के भेजा है, वो गलती से इंटर दब गया। इसीलिए सर, इसीलिए वो क्या गलती से गलतियां बहुत हो रही है यार इस देश में। चलिए क्वेश्चन फ्रॉम दुल्हन चंद गोस्वामी टू निर्मला सीतारमन। By how much is the going to increase to the meteorological department for modern equipments to provide better weather forecasting in order to aid farmers to plan their agricultural activities? Mute पे हो, mute पे हो। Sir, I guess your voice. Nirmala Sitharaman, you are on mute. Breaking up. Yes, We can't sir. hear you. Sir, now I can I hear? He Can can you hear hear you, me? but speaker is having net. Yes. We can't hear him. Madam, you already know the question. You people must have seen the discussion. Answer of this question is that the censor is already have a scheme called climate services to for climate services, and the fund is 2,135 crore always being provided for 2021 to 2026. All right, sir. Thank you. और सर कैन आई हियर यू का आंसर तो सर आप ही दे सकते हैं, मैं कैसे दूं? Yes, sir. So मेरा आंसर हो गया. So my हाँ answer is over. परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। हाँ भूपेंद्र यादव साहब फरमाएं। सर नमस्ते। सर जो क्वेश्चन माने श्रीनिवास रेड्डी जी से उन्होंने उठाया है, क्या मैं उसका जवाब दे सकता हूँ? नहीं सर, नहीं दे सकते। ओके सर। Next is to Mr. Piyush Goyal. Is Mr. Piyush Goyal here? Yes. हाँ तो पीयूष जी ये बताइए, how is the government going to synergize the agricultural sector with the PM Gati Shakti master plan to create a national market and boost export? Since we all know a combination of 16 ministries, including railway and roadways, together for integrated planning and coordinating implementation of infrastructure connectivity project.
by this project, we can cut down logistic cost that was not that was very high, and we can create a supply chain cost. We can create a chain cost that was 12%. That was initially 12% of GDP. Now what we can do is by this yojana, since perishable in nature, it gets destroyed when it reaches to its destination. These commodities export. So by these yojana, all the bottlenecks of the connectivity will be removed, and the commodities will be easily reachable to the countries that we are going to export the commodities, and logistic cost will be much more lower down, and we can get when we can and then we can get more profit from it. That's it. Thank you so much, Piyush Goyal ji. The next question is to Narendra Singh Tomar, yet again not here, to Giriraj Singh. Giriraj Singh ji हैं यहाँ पे? जी हाँ. What is government's plan of action for replenishing groundwater tables? Answer for this question is the government has already launched many programs and schemes in order to ensure that the groundwater table level of the groundwater table is maintained and even replenished. So first could be the Jal Shakti Abhiyan launched in 2019, where the government is going to focus on 256 districts of India where the groundwater level is really stressful. The condition of the level of the groundwater table is really stressful. So we are going to work on that. Then there is a master plan for artificial recharge to groundwater launched in 2020, in which we'll be working with the state government and ensuring that 1.42 crore rainwater harvesting and artificial recharge structures are built all across the country to harvest 5 billion cubic meters of rainwater. And in addition, the government will also launch the Catch the Rain campaign to promote rainwater harvesting and the entire practicing culture of rainwater harvesting. Then there is the Atal Bahujal Yojana launched in 2019, where both the Indian government and the world government will be coming together and working to ensure that the overexploitation of water level in the stressed water level, groundwater level stressed areas ensured and it's not exploited much further. And then there is Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, known as AMRUT. And again, we are going to the water level is stressful, it's not exploited, and it is missing. So for as of now. Thank you so much, sir. Thank you for your answer, sir. राहुल गांधी जी, आपका जो दुल्हन गोस्वामी जी से सवाल था वो नहीं पूछा जा सकता बिकॉज ऑफ फॉर्मेट सही नहीं है. That was the point of information that I had written for a speech. ठीक है, प्रिया सूले साहब, आप सकता है कि फॉर्मेट सही नहीं है. जो आपका नरेंद्र मोदी जी से सवाल है ये जरूर पूछ लेंगे कि नरेंद्र मोदी जी बताइए. जी सर, as mentioned पहले भी in the committee by me, ICAR की रिपोर्ट में लिखा था कि पूरे देश में 125 to 273 है. बहुत सारे स्टेट्स में उत्तर बंगाल, छत्तीसगढ़ के ऊपर भी इंक्रीज है. However, पूरे देश में ये सरकार की भी हल्की सी नाकामी है कि डबल नहीं हो पाई है, बट हम इसका थोड़ा बहुत श्रेय कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हर क्षेत्र में थोड़ी बहुत there were few losses in every sector of the country due to the COVID-19 pandemic. There were mass migration due to the pandemic as well, which led to a slowdown of crop growth. However, we wish to make sure that all of the states come above the reach our targets as soon as possible. The government is working on its full swing.
some states have been possible, the others you, will sir. be possible soon as well. नरेंद्र सिंह तोमर साहब का क्वेश्चन था नहीं मौजूद। फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्राइम मिनिस्टर से पूछा है, who will take the responsibility of the deaths that have been during the prime minister? फारूक अब्दुल्ला साहब, हम भी उतने ही दुखी हैं इन डेथ्स पे जो हुए थे. However, most of the blame goes for it to the opposition spreading misinformation time and again and misleading the farmers. The government tried its level best to impart as best information about the farm laws as we can. Even after that, we undertook 12 rounds of talks to undergo amendment on the farmers bill, a lot of which were agreed to, but the bills were still not so misled by the opposition. Opposition ने farmers को बरगलाया था, due to which a lot of unlawful activities also undertook in the protest, where there was a Singhu border lynching and the I'm sorry for the apologies for the inconvenience. There was a Singhu border lynching. Also, Republic Day पे जो रेड फोर्ट पे हंगामा हुआ, वो भी किसी की गलती थी. हम फार्मर्स को दोष देते क्योंकि वो हमारे देश का हिस्सा है, वो वही solutions बोलेंगे. However, the blame for this goes to the opposition to mislead them, and of course, there's always the stress of social media, how fast things spread on social media. So that will be my answer. Thank you. Thank you so much, sir. The next is Farooq Abdullah Saab had a question to Naren Singh Tomar. He isn't here. Then he has to Piyush Goyal. Are there any quality in the Department of Government? Piyush Goyal. Yes, sir. So yes, we do have many laws related to it. Number one is the Prevention of Adulteration Act 1954, which comes under food processing industries, and the other one is Food Product Order 1955, which also comes under processing. We all know about agriculture mark, which we know as ag mark, a certification mark to assure cultural products in India. Its objective is to provide good quality and unadulterated products, and grading can be used for domestic and export purpose. There are certain features about dating and inspection under the Ministry of Agriculture and Welfare of the Government of India. Do have it has many benefits, like farmers are benefited to those products that carry the ag mark. And the second benefit of these laws are marketing the products, boost the marketing the product. And the third one is the quality of products. That all right. Thank you, Piyush Goyal Saab. The next question is to you. As the certain changing in the environment, what initiative should the government have taken earlier and will have taken earlier and will take later to overcome the... Okay, sir. So the answer for this is that the changes in the environment is basically because of climate change are everlasting and are going to continue. So multiple schemes and programs launched. Now you have to understand, when climate change or environment change is happening, there are only two basic consequences regarding crop failure or some alteration in the crop, or else the groundwater table goes down and there is no water for irrigation. So that answer is answer to the second part about
table and everything has already been answered in my previous question. What if the crop fails? Is not there, the question has already been answered. Thank you. And as the and for other funding for dairy, we have tried to fund more as long as we can. We have also tried to, we have started transportation costs come down. Thank you, sir. This was my answer. And the amount for the government allocates, sir, that will now we are providing 3% of the GDP. From there, our plan is to take from 4 to 7%. Thank you, sir. It is met with harsh criticism and non-cooperation by the opposition. So maybe they should introspect on this point themselves. So that will be my answer. Thank you. Thank you, Mr. Prime Minister. बाबा मोहित्रा जी का सवाल था नरेंद्र तोमर साहब से। नरेंद्र तोमर साहब नहीं है, क्या कर सकते हैं? The next is questioner Narendra Tomar from Supriya Sule. Can't be conducted, madam. Questioner from Narendra Tomar from C. Can't be conducted. श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं क्या हमारी कमेटी में? नहीं सर। और ये किसको देंगे जिम्मेदारी? Just a second, sir. सर भूपेंद्र यादव सिंह जी ने बोला था अगर उनके क्वेश्चन आएंगे तो वो आंसर कर सकते हैं. इट इज अप टू हिम इफ ही वांट्स टू आंसर इट. भूपेंद्र यादव साहब आंसर करेंगे आप? जी सर. हाँ तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट वैसे आप ही पे है, तो कर दो आंसर. हाउ डू यू लुक ऑन टू द फ्यू कंपनीज एस्टैब्लिशिंग मोनोपोली इन एवरी सेक्टर? सर जो कंपनीज आजकल इनका आरोप है कि कंपनीज एस्टैब्लिश हो रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है. जो सरकार की नीतियां हैं उसी हिसाब से कंपनीज को काम करने के निर्देश हम देते हैं हमेशा. और जो भी इनके आरोप है वैसे सब झूठे हैं और क्वेश्चन भी बेबुनियाद है, क्योंकि कंपनीज की मोनोपोली अगर सरकार से अगर टकराना चाहेंगे तो उनके लिए खुद हम स्वागत करते, लेकिन सरकार से उन्हें टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार हमेशा देश की जनता के लिए और देश के हित में काम करेगी, ना ही किसी कंपनी या ना ही किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए. नरेंद्र सिंह तोमर. Can I take few questions of Agriculture Minister? सर मैं थोड़ी बांट रहा हूँ यार. Ask your Prime Minister. Yeah, I am not the one who is distributing the questions, right? It will be your Prime Minister. Am I allowed to distribute the questions addressed to Narendra Singh Tomar, sir?
No, sir, because Narendra Singh Tomar happens to be here. Yeah, they were there in the beginning of the committee. Yes, I know that. All right, sir. Yeah. Nirmala Sitharaman ji, why have you increased GST on certain goods recently? Sir, I want to just tell that I have not increased. It is the GST council that have increased, and after very proper discussion, we have taken this. We have taken this decision with a lot of deliberation. So I want to just ask the concerned MP to. Thank you, ask, sir. Thank you so much. Narendra Singh Tomar Raja can't be. Sir, my answer was not nice. अरे नहीं, बहुत बढ़िया. अब क्या बोलोगे तो उसके बाद, मतलब मैं हर आंसर के बाद ये कोई स्कूल की फैकल्टी थोड़ी जो बैठ के इवैल्यूएशन करता रहूंगा आपका. ओके, सॉरी सर. मुझे जहाँ नंबर देने में दे दूंगा बाय डिफॉल्ट. All right, so we are done with the question hour. Six. All right, so Sir, I had a point of personal. क्या चाहते हैं? I had a point of personal privilege. Yes, madam. So you didn't read out my question while discussing the questions. I just wanted to know if you received it. Yes, madam, I must have received your question, but your questions might have been addressed to Shri Narendra Singh Tomar. Yes, sir. And henceforth, they aren't being discussed. Because Narendra Singh Tomar hai nahi. You have been marked for the questions that you have asked. So the next, don't worry about it. Sir, I have asked a question to Mr. Rajnath Singh. You have not quoted that. कहाँ है? I have sent it to Deputy Speaker, ma'am. As this chat box contains limit. Sir, limit. क्या limit? सर लिमिट की वजह से वो क्वेश्चन जा नहीं पाई एक फ्रेम में, और दोबारा आपने भेजने से मना किया था. लिमिट की वजह से नहीं जा पाई मतलब? सर एक वर्ड लिमिट है इस जूम चैट बॉक्स में, उसके बाद आप नहीं मतलब उसके बाद लिख सकते हैं. बहुत बढ़िया सर, कोई बात नहीं है. वो आपने डिप्टी स्पीकर मैडम को भेजी थी. डिप्टी स्पीकर मैडम से मुझे मिली नहीं है, ना मैं एंटरटेन करने वाला हूँ, बिकॉज एक सेट प्रोसीजर था दैट शुड हैव बीन अवॉइडेड विद. अब कल को आपने मुझे कुछ पर्सनल चैट में भेज रखा है सुबह से, मेरे को क्या पता. Deputy Speaker Madam has got some other better works to do, right? In light of that, Madam Deputy Speaker. Madam Deputy Speaker. Madam Deputy Speaker. Pardon, sir. You weren't audible clearly. Did you call out? हाँ जी बिल्कुल. बताइए कमेटी के बारे में फीडबैक दीजिए. करिए क्या इम्प्रूव कर सकते हैं. स्पेसिफिक मत दीजिएगा, जनरल. सर पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कमेटी थोड़ी डायरेक्शन लेस लग रही है फिलहाल मुझे. कमेटी इम्प्रूव हो सकती है मामले में. कंसेंसस बिल्डिंग चाहिए कमेटी में. दूसरी बात ये चाहिए कि हम एग्रीकल्चर के टॉपिक पे रिफॉर्म के बारे में बात करना है हमें. बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हम फार्म लॉस पे ही घूम के आ रहे हैं, जो टॉपिक काफी डिस्कस हो चुका है 2 सालों में. तो फिर हमें डेवलपमेंट के रिफॉर्म के बारे में बात करनी है. एंड आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट टू द कमिटी कि हम नए आइडिया प्रपोज कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत स्कोप है कि आप नए आइडिया ब्रिंग अप कर सकते हो रिफॉर्म के लिए. तो फिर वो बात है. और आई थिंक कंसेंसस बना सकते हो आप. वो स्टार्टिंग में जो मोशन फेल हो रहे थे एक बाय एक, वो काफी ऐसा लग रहा था कि जो रूलिंग पार्टी है वो खुद डिवाइडेड है. तो फिर आई विश कि लॉबी अच्छी तरह करें और कल साथ में आके प्रपोज करें अच्छी तरह सब कुछ, और रिफॉर्म्स के बारे में बात. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ.
Thank you so much, sir. Where is Lay? Sir, actually, उनका internet disconnect हो गया. She will be here in a minute. All right. Okay. Nirmala ji, फरमाइए. Yes, sir. So I was just telling, sir, कि yeah, I was with the point with the deputy speaker. I also thought that we need to be better lobbying, and we should focus more on reforms. Like, you know, there are so many aspects. Like, we have not spoken about dairy farming, animal things also come in the farming sector, about water resources. Everything we should discuss here tomorrow. मुझे क्यों बता रहे हो? No, I was just telling, sir. नहीं तो सर को भी क्यों बता रहे हो? Yet again the question remains the same. मेरे को और सर को थोड़ी डिस्कस करना है. डिस्कस तुम्हें करना है. डिस्कस अमंग्स योरसेल्फ भाई. हाँ मोदी साहब, क्या हुआ? Sir, point of parliamentary inquiry. Since it's 4:43, will we be taking another motion for? No, I don't sir. think we would be able to take. So, is this the end of formal Not proceedings as for the day? such. We are waiting for Madam Deputy Speaker to appear and give her feedback. उसके बाद 5 मिनट की झाड़ में लगाऊंगा and then we are done. Okay, sir. Sir, another question. हाँ जी. About the marking. If we present a table a bill and if it does not passes, does it negatively affect or does it have no effect on the marking? बहुत बढ़िया. Very good. Brilliant question. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में एक बिल लाते हैं और वो बिल फेल हो जाता है. सर, कोरम का इशू चल रहा है थोड़ा. आज आपने खुद भी देखा मिनिस्टर प्रेजेंट नहीं है. पता ही नहीं है. हाँ, I am least concerned with the quorum का issue. Quorum yet again is none of my issue. So that's why I'm asking in the consideration of individual marking. अरे सर, इंडिविजुअल तो है ही बिल्कुल. आप सरकार के प्रधान हो. हर किसी की गलती आप पे आएगी. ठीक है सर, ये भी ठीक है. मतलब एक वो होता है ना, यू हैव टेकन द पोर्टफोलियो ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर को ओपनिंग स्टेटमेंट में पहला मिलता है. पक्का एक बोलने का मौका तो बाकियों से ज्यादा मिलेगा ही. तो व्हेन यू एंजॉय दोस पर्क्स, ये साथ में लायबिलिटी आएगी सर. कांट हेल्प. किंतु आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर गायब हो गया क्वेश्चन आवर में, तो थोड़ा तो मतलब कहीं ना कहीं समस्या तो है चीजों में. बट लेट इट बी. हाँ, कहा मैडम डेप्यूटी स्पीकर नहीं आ पाई? कोई बात नहीं मैडम. ब्रिलियंट. ये बता दो इनको, स्पेसिफिक फीडबैक नहीं, इन जनरल समझाओ कल क्या करना चाहिए. Okay, so what I observed today is that the committee does not really have much consensus because most of the motions that were raised failed. So tomorrow, when you all come in, please have some consensus because whatever we be discussing should be discussed as a unit. And apart from that, we hope that there is more interaction and much more level of enthusiasm. Thank you. And it's a request from my side that can we keep cameras on tomorrow? It would be much more interaction, and I hope we don't face any technical issue. आदमी है, बहुत कुछ चाहता है. खैर कोई बात नहीं ना. My feedback to this committee will be very simple कि एक तो जैसे भाई ने कह दिया था कि आप लोग देवाए जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, कोई डायरेक्शन नहीं है कमिटी. मतलब और वो दिख भी रहा है. that is reflected from the experience which most of you people are having. but eventually यार उसे overcome आपको करना पड़ेगा, क्योंकि being representing a high-fi portfolio, you cannot be like कि
कि आपसे सवाल आ रहा है और आप उसे आंसर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, हर पोर्टफोलियो के साथ एक उसकी लाइबिलिटी अटैच होती है और वो कुछ बड़े पोर्टफोलियोज के साथ बहुत ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि हाँ एक वो होता है कि आपको बोलने का मौका मिलेगा। नाउ द पॉइंट इज, अभी तक आप लोग, मैं समझ नहीं पा रहा कि जब मैंने फर्स्ट आपको ब्रेक दिया था बिफोर, जस्ट आफ्टर द ओपनिंग स्टेटमेंट्स एंड बिफोर द फर्स्ट सेशन, मैं तब से आपको यही चीज समझाने जा रहा हूँ कि यार कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी पास करो ना, उस पर डिबेट करो। आपको अच्छा लगता है फॉर बोलो, वरना उसके अगेंस्ट बोल दो, बात खत्म। बट दी सोल प्रॉब्लम इज, आप सब लोगों ने क्या कर रखा है, हर किसी ने अपना एक एक टॉपिक पकड़ रखा है और कसम खा के बैठे हो कि दूसरे पे नहीं बोलेंगे। खेलना है तो हमारे वाले पे आके खेलो, और उससे इवेंचुअली ना तुम्हारा काम हो पा रहा है, ना कोई डिबेट हो पा रही है, ना तुम्हें नंबर मिल रहे। क्योंकि जब एक मिनिस्टर बिल प्रपोज कर रहा है, बिल क्या, मिनिस्टर कोई मोशन प्रपोज कर रहा है और वो मोशन फेल हो रहा है, पास नहीं हो पा रहा है। अगर ये एक्चुअल इंडियन पार्लियामेंट होती तो यहाँ पे सरकार गिर चुकी होती अभी तक, अगर मिनिस्टरों के मोशन पास नहीं हो रहे होते। अब आई डोंट नो हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू respond to it as far as the marking is concerned and everything, क्योंकि ये utter stupidity हो रही है आपके पास, और ये cumulatively हो रही है. So I am not pointing out one or two individuals. Similarly, opposition किस हिसाब से खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, God knows. मतलब you people are even a worse opposition than what we are actually having in the parliament today. So please try and improve, come up with a direction as to what ought to be debated. Random कुछ भी नहीं करना है यार. मैं ये पढ़ के आया हूँ कि खाद बीज कैसे बटेंगे, तो बोले जब तक खाद बीज की बात नहीं होगी तब तक आगे कुछ होने ही नहीं दूंगा. वो अच्छी बात है, आप अपनी जान में बहुत खुश हो रहे हैं, बट कल फिर जब रिजल्ट्स निकलेंगे तो एक बहुत शॉकिंग स्टेट हो सकती है. एंड आई एम ओपनली स्पीकिंग कि अगर आप एब्सेंट माइंडेडली कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके रिपरकशन सर पक्का होंगे. तो प्लीज बी वेरी वेरी श्योर कि एटलीस्ट अभी तक मेरे को एक भी आदमी नहीं दिखा जो कि कमेटी को किसी भी प्रॉपर डायरेक्शन की तरफ चैनल आउट करने की कोशिश कर रहा हूं. और कमेटी का मतलब यही नहीं होता कि मैं बीजेपी से हूं तो मैं, मेरे लिए एनडीए है, या मैं ऑपोजिशन से हूं तो मेरे लिए कांग्रेस है. आप पूरी कमेटी चला सकते हो यार, इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फ्रॉम एनी पार्टी. बट आप अभी तक खुद के ब्लॉक्स में नहीं निपट पाए हो तो आगे डिबेट डिस्कशन का कोई पॉइंट बचता ही नहीं. सो लास्टली, थोड़ी कोशिश करिए, थोड़ी पढ़ाई करिए, थोड़ी 50 पन्नों की तो तुम्हें बैकग्राउंड गाइड मिली है. मैंने मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बैकग्राउंड गाइड नहीं देखी. और उसके बाद भी तुम मतलब एक एक टॉपिक पकड़ के बैठे हो कि बोले नहीं मेरे वाले टॉपिक पे बात करो, नहीं मेरे वाले पे करो, पहले मेरे पे करोगे तो तेरे पे करूंगा. व्हाट इज दिस हैपनिंग? Let it be whatsoever it is. Thank you so much, everyone. Or if there is any feedback that you wish to give to me or to my co-chairs on my Skype or OC वालों को, the floor is open. Kindly let us know. Something that you want us to change, something you want us to improve, something you want us to innovate.
tomorrow there will be a 0 hour. सर मैं आपको शुरू के दिन से कह रहा हूँ, आज सुबह भी कहा है ये कमेटी आपकी मर्जी से चलेगी, मैं केवल फैसिलिटेट कर सकता हूँ सर. इफ यू वांट 0 hour हो जाएगा, इफ यू डोंट वांट आई एम ऑल फाइन विद इट. मेरी तरफ से आप कोई डिस्कशन मत करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरा जीवन वैसे बहुत अच्छा चल रहा है. आप कोई डिस्कशन करोगे, यू आर मोस्ट वेलकम. सर any feedback, any suggestions to us? निर्मला जी, मतलब इतने के बाद मुंह पे हाथ लगा के ऐसे बैठे, कुछ निकल ना जाए मुंह से, है ना? नहीं सर, मैं कुछ सोच रहा था और प्लानिंग कर रहा था. अरे करो करो, सॉरी टू डिस्टर्ब सर, my sincerest apology. So it's not apologies. I was just thinking something what we can do better for tomorrow. Perfect, sir. All right. So, by Drishakle, we are set to leave, right? We can adjourn the committee, right? Yes, sir. Perfect. Any motions on the floor? Rahul Gandhi ji. I, Rahul Gandhi, would like to pass the motion to adjourn the committee for it. Madam, एक reconvene बोला जाता है. To reconvene at 10 a.m. tomorrow. Thank you so much. Motion is in order. जब हमें reconvene, वापस reconvene कब करेंगे टाइम नहीं पता होता ना, तो उसके लिए हम कहते हैं कि is to be adjourned sine die. That is till further notice. वो नोटिस जब आता है तब वो मान लिया जाता है. हाँ, those in favor may raise their hands now. बहुत बढ़िया. 20 लोग, 3 ओसी वाले, 15 पहली बार वोट हुए. चलिए बहुत अच्छा. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर. Thank you, May. Thank you, Drishak. Bye bye. Yes, sir. Take care. Take care, everyone. Thank you. See you tomorrow. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. If you want to lobby, you can stay back. I see. Yeah. Same, yeah. I was thinking about that. Stay back for a bit. Like, are we allowed to stay back, or we need to make our own meet and go there, like deputy speaker? Pardon. Are we allowed to stay back here and discuss, or should we go on to have our own? I think preferably you can have your own Google Meet. We can officially wind up the committee in our. Okay, sure. Yeah.